अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं अबू बकर दिलावर आपको हमारे इस पॉडकास्ट फाउंडर्स कहानी पे खुश आमदीद कहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, फाउंडर्स कहानी पे हम हमेशा दिलचस्प फाउंडर्स, हमेशा दिलचस्प कहानियों को लाते हैं जिनसे आप कुछ लर्न कर सकें और जिनसे आप अपने स्टार्टअप आइडिया को और अपनी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी को बेहतर बना सकें। तो आज भी हमने कुछ इसी तरह के स्टार्टअप को बुलाया है, इसी तरह के फाउंडर को बुलाया है जिनकी बड़ी अमेजिंग कहानी है, जो कि शुरू तो कराची से हुई और टेक्सटार से होते हुए दोबारा कराची में आ गए हैं और अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ रहे हैं। सो प्लीज वेलकम समीर खान, द सीईओ ऑफ सोशल चैम्प। हाउ आर Assalamu यू सर? alaikum. Alhamdulillah, I'm really good. Thank you so much for inviting. It's our pleasure to have you on our podcast. Mm. Yeah, thank you so So much. Good. it's Founder's Kahani. What's the Kahani of Sameer? So basically, the Kahani is like, it's not very different. I think you see a lot. I grew up in Qatar, got my early education wahan pe, and then something got bad. We moved to Pakistan. I was in ninth grade, and we have to restart our entire journey. And from that day, actually, we started, educating, learning stuff, going to universities. And then in startup journeys like this, is Soil Champ is our fourth startup. Three did not work out. Learned a lot of lessons from all those startups failures कि क्या क्या हमने गलतियां करी, हमें नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन उनसे सीखा हमने और फुल सोशल चैम में उसको सब इम्प्लीमेंट किया. और एंड इट्स अ वेरी डिफरेंट जर्नी, लाइक starting from a middle class family जहाँ पे लैपटॉप के लिए I had to sell a small car जो FX बुगी थी to get a laptop. To pay for university, I had to ask for some loans. But then eventually, it all started connecting. The puzzles got connected. Everything started going good, mashallah. Yeah, that's really nice. That's really nice. It's very impressive Kahani, by the way. And can you tell me what of services the Social Champ is providing right now? Yeah, Social Champ is a social media management platform. So it's a one window, एक website है जहाँ पे आप sign up करो, log in करो, और you can connect your 9 different social platforms: Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest, Google My Business, Mastodon, TikTok. ये सारे platforms आप connect कर दो वहाँ पे, and when you post over there, हमारे प्लेटफॉर्म जाके आप कंटेंट लिख के पोस्ट करेंगे तो हर जगह पोस्ट हो जाएगा. यू कैन स्केड्यूल कंटेंट. So it's one window to post your stuff to across 9 different platforms. And then more than that, there's analytics. आप देख सकते हो कौन सी पोस्ट अच्छी जा रही है, कहाँ पे customers आपको जहाँ मैसेज कर रहे हैं, you can reply from Social Champ. So there's a lot of stuff happening within Social Champ where it helps you to become a better social media manager, a better digital marketer, and do your stuff with automation. That's very nice. That's very nice. Actually, I also have a small digital marketing business, so it's a very useful tool for me even. Yeah. Yeah, So, that's really true because a lot of people yeah, use it. Middle class, exactly. yeah. Exactly, exactly. So you have been the part of some startups previously, like GameOChat, Educating Dreams, and RemindZapp. How did these startups contributed in shaping your entrepreneurial journey? I think every startup that we have been into, it really helped us to get more, to do more stuff in a better way. So, for example, with the first startup that you said, the GameOChat. In GameOChat, we learned GameOChat. By the way, these all startups won a lot of competitions. They've won a lot of rewards. For example, GameOChat, आया था top Microsoft Azure platform, Microsoft Imagine Cup के अंदर within Pakistan, won a lot of prizes, won an excellent prize. And the best thing is that, GamerChat taught us that MVP is very important, creating a minimal viable product. We took a lot of time, 3 years to build a product, to launch it. It took us more time. So first product, GamerChat, taught us to create a good MVP, minimal viable product. तो जो भी आपका आइडिया हो, ये नहीं कि आप सब कुछ करने के बाद उसको लॉन्च करो. जो उसका कोर आइडिया की वैल्यू है, वो बनाओ और फोन लॉन्च कर दो. सो आई थिंक दिस इज समथिंग दैट हेल्प्ड अस अ लॉट कि यार भाई, व्हाटएवर इट्स राइट नाउ इन सोशल चैम्प, व्हेन यू थिंक ऑफ क्रिएटिंग अ फीचर, हम ये नहीं सोचते कि इसका बड़ा वर्जन तो ये होना चाहिए, लेकिन जस्ट क्रिएट अ स्मॉल वर्जन ऑफ इट एंड लॉन्च इट एंड सी हाउ पीपल आर यूजिंग इट. क्या पता वो उसको इस्तेमाल ही ना करें, देन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ इन्वेस्टिंग सो मच टाइम इन क्रिएटिंग अ बिग फीचर, राइट? So that's one called MVP. Second idea was educating dreams. In educating dreams, we learned the concept of feedback.
getting feedback from customers is very, very important, right? And हमने feedback लिया in educating dreams के people would just like to use it or not. And then in educating dreams we saw one monopoly was there, that in educating dreams the idea was कि हमें गरीब बच्चा नजर आया, वो मुझसे पैसे मांग रहा था, मैंने कहा यार तुम पढ़ते क्यों नहीं हो? तो उसने कहा साहब अब पढ़ाई तो अमीरों के लिए होती है, और वो मुझे दिल पे बहुत लगा। मैंने कहा यार ये क्या बात हुई? एंड आई न्यू देयर आर स्कूल्स आउट देयर जहाँ पे आपको पैसे दिए जाते हैं बच्चों को पढ़ने के, किताबें दी जाती हैं, बट एट दैट टाइम इन कराची आई डिडंट न्यू कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है नहीं करता और कहाँ पे है। वी थॉट ऑफ क्रिएटिंग अ प्लेटफॉर्म, ब्रिंगिंग टुगेदर एनजीओज, these kids who want to study, right? People can report these kids and the NGOs can pick them and they can study there. हमने पूरा मॉडल बनाया, वन लॉट ऑफ कॉम्पिटिशंस। हम बहुत बड़े एनजीओ के पास गए जिनका नाम नहीं लेना चाह रहा मैं। उन्होंने कहा कि यार हम ना एक एक बच्चे को उठाते नहीं है, हम ना स्कूल खोल देते हैं, एक एक बच्चा नहीं उठाते हम। हमने कहा ठीक है हम ऐसा करेंगे कि जहाँ जस्ट रिपोर्टिंग आ रही है वहाँ हीट मैप बन जाएगा, जहाँ पे ज़्यादा हीट मैप बने वहाँ पे स्कूल खोल दिएगा। उन्होंने कहा बेस्ट, हम ही करना, हम इस पर एग्री करते हैं। वी मेड दैट मॉडल, हमने पूरा प्रोडक्ट बनाया, वापस गए तो उन्होंने कहा कि बेस्ट है ये, लेकिन बट वी वांट टू यूज दिस प्रोडक्ट फॉर आवर ओन सेल्स, दिस शुड बी एक्सक्लूसिव टू अस, कि मतलब ये है कि कोई और ना इसको इस्तेमाल करे, सिर्फ हम ही इस्तेमाल करें। एंड दिस वाजंट द आइडिया, द आइडिया वाज अबाउट क्रिएटिंग मल्टीपल एनजीओस टू बी ऑन वन प्लेटफॉर्म, राइट? बट देन वी फिगर्ड आउट क्या ये मोनोपोली बहुत है। फॉर एग्जांपल इन अ कंट्री वेयर जो 2 एम्बुलेंस सर्विसेज हैं, दे डू नॉट वांट टू कोलैबोरेट, कि एक बंदे की जान बच सकती है, कोलैबोरेट करके नियर बाय में एम्बुलेंस भेज दें, इवन दो द मिशन एंड विजन इज टू सेव लाइफ, they still don't want to collaborate. Then how come education we can fight, I can fight in education? So I thought, okay, maybe when I get rich and famous I'll come back and invest in my own product, this. So I stopped that product, right? I couldn't fight the monopolies existing in this world. The third was RemindZapp. RemindZapp again was idea based on it was idea when WhatsApp didn't have double tick blue color का, right? तो आपको याद नहीं, पता नहीं चलता कि उसने मैसेज पढ़ा या नहीं पढ़ा। इट वाज अ नोटिफिकेशन बेस्ड ऐप जहाँ पे आपको रिमाइंड करा सकते हो किसी को कि यार आते हुए अम्मी याद दिला देंगे, आते हुए भाई टमाटर ले आना, और भूल जाओ तो एक खुद बहुत ऑटोमेटिक मैसेज जाएगा, कॉल जाएगी कि भाई ये लेके आनी है आपको, राइट? सो वी क्रिएटेड दैट मॉडल, वी टुक अ फीडबैक, हमने 100 लोगों से फीडबैक लिया, रैंडम स्ट्रेंजर्स से। हमने सुना था कि फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर क्रिएटिंग एन आइडिया। वी टुक फीडबैक, अराउंड 60-70% पीपल सेड दे वांट टू यूज द प्रोडक्ट। जब भी आपको 60-70% लोग मिल जाए जो यूज करना चाह रहे हैं, उसमें 20-30 बोले हम विल पे फॉर द प्रोडक्ट, इट्स समथिंग लाइक यू हैव हिट अ जैकपॉट, राइट? कि ये वाकई इसकी नीड थी लोगों को पता नहीं इसके बारे में। तो वी स्टार्टेड क्रिएटिंग दैट प्रोडक्ट. It was incubated at the Nest High run by Jahara. Right now it's run by Catalyst Lab. So we started, incubated over there. We got investment opportunities. लेकिन जब हमने बना के लॉन्च किया उसको, फुल हमने इन्फ्लुएंसर स्टाइल में लॉन्च किया कि इन्फ्लुएंसर्स को बुलाया कि इसकी रीच, इसकी टॉक्स के बारे में बातें करें और शेयर करें, ट्रेंड कराएं ट्विटर के ऊपर। एंड वंस वी लॉन्च्ड इट, वी फिगर्ड पीपल आर नॉट यूजिंग द प्रोडक्ट, एंड वी फिगर्ड आउट दैट कि यार हम पाकिस्तानी लोग ना, हम लोग किसी का, हम लोग सच नहीं बोलते लेकिन दिल नहीं तोड़ना चाहते। तो फॉर एग्जाम्पल पीपल, लोगों ने क्या किया, लोगों ने को पसंद नहीं आई होगी, उन्होंने कहा इन्हें बहुत पसंद है। अगर कोई आपसे पूछे ना अगर कि आप ये बंदा कैसा लग रहा है, बोलोगे बहुत अच्छा लग रहा है, फिर जैसे ही चला जाएगा बोलोगे यार पता नहीं अजीब सा लग रहा था ये तो, राइट? लेकिन हम दिल नहीं तोड़ना चाहते चाहे आपको झूठ भी बोलना पड़े। तो आई थिंक दिस इज व्हाट हैपेंड विद द फीडबैक जर्नी, दैट पीपल डिड से दे वांट टू यूज द प्रोडक्ट। देन वी लर्न कि यार लोगों से ना एडवांस पैसे ले लो, जब पैसे एडवांस लोगे ना देन दे विल से द ट्रुथ कि यार अबे यार इसमें ये मिसिंग है, ये मिसिंग है। सो आई थिंक दीज थ्री lessons we learned from the startup journey. I think it was a good journey so far, but these were the lessons that shaped the entrepreneurial journey. I think you're on mute. या आपने वैसे अपनी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी कब स्टार्ट की? I think it was in 2011. 2012 में मैं graduate हुआ from Karachi University. In 2011, I thought of doing freelancing Upwork पे जाकर, Upwork उस टाइम पे ओडेस्क था, तो आई थॉट कि यार वहाँ जाके हम लोग ना 11-12 लोग थे मेरे ग्रुप में, मैंने कहा जाओ हम लोग ना फ्रीलांसिंग काम करते हैं, और वी स्टार्टेड गेटिंग फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स। और जो मैं खुद भी कर रहा था, तो मुझे इतने सारे आने शुरू हो गए, मैं अप्लाई भी करता रहता था, तो मैं लोगों को देने लगा। यार मैंने कहा यार तुम ये करोगे? हाँ। उसने कितने में? उसने कहा 20,000। मैं कहा चलो ये ले लो तुम। उसको एक प्रोजेक्ट दे दिया, एक और दोस्त को कुछ दे दिया, एक और को दे दिया, मैं बांटता रहता था प्रोजेक्ट। और अभी प्रोफाइल भी अच्छी बनती रही उस टाइम पे, एंड देन दैट्स व्हेन वी स्टार्टेड अवर, यू कैन से पार्ट टाइम, यू कुड से। बट इन 2012 में जब ग्रेजुएट हुआ तो हमने 1.5 साल एक काम किया। उसके बाद वी हैड एन अपॉर्चुनिटी फ्रॉम अ वेरी बिग कंपनी इन लाहौर, who was trying to pay us 3x of
what we are getting salary, plus 2 tickets to Karachi, all that stuff. तो फिर we figured कि यार हमें जब इतना पैसे दे रहे हैं और इतना ट्रैवल भी करवा रहे हैं, तो पूरा हमें हमें कैसे टाइम मिलेगा अपने अलग स्टार्टअप करने का. So that was the point when we thought कि यार what, let's just focus on create Ozil Systems, a software consulting business, or we'll just try to save money so that we can invest in products. तो वहाँ पे जाके we started creating this software company. दो और co-founders थे, 3 co-founders थे मेरे पास. हमने मिलके एक सॉफ्टवेयर सर्विस कंपनी खोली. नाइस नाइस. तो बड़ा आपकी दिलचस्प जर्नी रही है. अच्छा, आपकी जर्नी को जब मैं स्टडी कर रहा था, आप एक की करियर में एक बड़ी ट्रांजिशन आई है कि एक टेक गाय से होते हुए आप यूएक्स यूआई और वीडियो एडिटिंग की तरफ चले गए. तो ये मल्टी डिसिप्लिनरी जो आपका करियर है, इसने आपको किस तरह से हेल्प किया अपनी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में? आई थिंक ये इट शुड बी रियली बेस्ड ऑन इंटरेस्ट. ठीक है, और ये ऐसा नहीं है कि मैंने एक दिन किसी ट्यूटोरियल देखा, मैंने कहा चलो वीडियो एडिटिंग आ गई तो वेरी गुड यार मैं डाल दूंगा रेज्यूमे के अंदर. इट वाज बेस्ड ऑन इंटरेस्ट. और आई स्टिल लव कोडिंग. आई जो भी चीज़ें मैंने करी आई स्टिल लव इट. आई स्टिल समटाइम्स कोड फ्रंट एंड पे, डिज़ाइन यूएक्स यूआई पे. आई स्टिल लव टू कोड, आई स्टिल लव टू वीडियो एडिट. मैं अभी भी वीडियो एडिटिंग करता हूँ, अभी भी ऑडियो को थोड़ा सा बेहतर करने की कोशिश करता हूँ. ऑडियो इंजीनियरिंग होती है. आई ट्राई टू डू दैट स्टफ. राइट नाउ सोशल मीडिया इंस्पायर्स मी, मोटिवेट्स मी कि सोशल मीडिया में नया क्या हो रहा है. सो यू कैन से आई एम मार्केटिंग पर्सन, परफॉर्मेंस मार्केटिंग में शौक है. How do conversions come in, right? I think it's all up to what interests you when you're working out. For example, मैं जब फ्रंट एंड काम कर रहा था तो मुझे बैक एंड भी करना पड़ रहा था to be a full stack developer, right? तो मैंने बैक एंड में काम किया, MongoDB पे काम किया, Node.js पे काम किया, but I didn't like MongoDB and Node.js because उसमें डेटा था लेकिन उसमें लाइफ नहीं थी, कलर्स नहीं थे, ग्राफिक्स नहीं था, राइट? सो इट वाजंट, आई डिडंट लाइक डूइंग दैट. लेकिन फिर भी मैंने किया. आई ऑप्टिमाइज लॉट ऑफ क्यूरीज, मतलब मेरा प्रॉपर प्रोफेशनल काम है उसके अंदर, राइट? लेकिन आई डिडंट एंजॉय इट, राइट? सो आई एंजॉयड फ्रंट एंड. देन आई स्टार्टेड, जब फ्रंट एंड पे आया तो उसमें ग्राफिक्स भी आती हैं. फिर मैं अपनी वीडियोस भी एडिट करने लगा था, जो टॉक्स करी, शोज करे, उसकी एडिटिंग करना सीखने लगा. एंड देन स्लोली इट kept on, I kept on changing it. एग्जैक्टली आई थिंक मैं ना आपकी इस बात से बड़ा रिलेट कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ग्रेजुएट हूँ. आई जस्ट कंप्लीटेड माय ग्रेजुएटेड इन 2022. लेकिन मुझे बड़े टाइम के बाद काफ़ी स्किल सेट्स और काफ़ी तरह की जॉब्स करने के बाद रियलाइज हुआ कि आई एम अ मार्केटर एंड आई कैन डू गुड थिंग्स इन मार्केटिंग. सो दैट्स वाई मेरी भी करियर में बड़ी ट्रांजिशन रही है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उसके बाद एक वीडियो एडिटर, ग्राफिक डिज़ाइनर से लेकर मार्केटर तक है. Now I am a podcast host, startup founder, and a marketer. Oh, perfect. Very nice. Huh? This is a good change that happens. I think it's just what interests you. Keep doing that, and you'll go much further into it. एग्जैक्टली मुझे लगता है ना कि पाकिस्तान में स्टूडेंट्स को इतना आइडिया नहीं होता अपनी डिग्री चूज करते वक्त के व्हाट्स देयर इंटरेस्ट इज. उस डिग्री के बाद वो चूज करते हैं कि व्हाट दे आर रियली. Yeah, I think for university students, it really matters to be, for example, if you're an IT student in third year, focus on focus on going to these challenges, these competitions, compete in those, see if you can win few, see what interests you. देखो दुनिया में हो भी क्या रहा है, क्योंकि कभी-कभी आप अपनी यूनिवर्सिटी में सबसे बेस्ट होते हो, राइट? लेकिन आप जब दुनिया में बाहर जाते हो, कंपटीशन के अंदर ही जाते हो, देखते हो और यूनिवर्सिटी के बच्चे आके जीते हुए होते हैं, then you realize कि यार, oh my God, I was in an illusion, right? I'm not the very best. Right, and that's how you somehow get inspiration and motivation to be the better person. Yeah, by the way, from which university you did graduate? I graduated from University of Karachi, KU, or so we were the first batch to enter to UBIT. So UBIT, if you Google UBIT department, you will see a big building which is very enormous and very good in design. So we graduated from that university. नाइस नाइस. अच्छा, आपकी स्टार्टअप जर्नी बड़ी इंस्पायरिंग रही है, बड़ी अप्स एंड डाउन्स रहे हैं कि आपने काफ़ी सारे वेंचर्स सीखे. अगर आप उसमें से कोई की लेसन हमें बताना चाहें जो आपने अपनी सारी जर्नी से सीखा इन द टर्म्स ऑफ स्टार्टअप इकोसिस्टम और स्टार्टअप्स. Yeah, I think there are a lot of lessons, to be honest, and I think the main one is to actually ask for help, learn to ask for help. क्योंकि हम बहुत दफ़ा ये होता है कि हम लोग अब स्टार्टअप जर्नी में हमें अवार्ड्स मिल जाते हैं तो वी थिंक दैट वी आर द बेस्ट,
and we can't ask for help, because if we ask for help तो लोग बोलेंगे अबे देखो इसको help चाहिए, right? So we always often forget that, if there's a junior person who can do a job better than you, let's say video editing ले लें आप, right? You're doing video editing which is not your core professional, but you're stuck in something, you can actually ask a junior to help you in that, right? इसी तरह बहुत सारे incubators, startup incubators हैं, Catalyst Lab हो गया, startup weekend job करवा रहे हैं Techstars का, right? In that, a lot of startups come there and they think that the investors or the mentors would come to them because they are so great that they're running a startup, right? Like, that's not the truth, right? You have to reach out to investors, you have to reach out to the mentors, you have to go and ask for help, right? The world doesn't revolve around you. This is a core concept that we learned, that bhai, if you're doing something, just don't expect कि दुनिया आपके पास आएगी. You have to still ask for help. And the worst thing is that people have even forgotten to, लोगों को तो भूल जाओ, they have forgotten to ask help from the one who created him, right? आप उस अल्लाह से, खुदा से भी नहीं मांग पाते. आपको लगता है कुछ उनको अरबी आती है, कुछ वो अरबी समझ पाते हैं, आपकी उर्दू समझ नहीं पाएंगे वो, तो आप उनसे भी नहीं मांग पाते. दुआ ऐसी हो कि फरिश्ते बोले क्या मांग रहे हैं, लेकिन ये काम फरिश्तों का नहीं है, कबूल करना खुदा का है. That's very valuable lessons I think you given. क्योंकि मैं भी दो गवर्नमेंट फंडेड इंक्यूबेशंस का पार्ट रह चुका हूँ. वन इज द प्लान 9 बाय पंजाब आईटी बोर्ड एंड नाउ आई एम करंटली इंक्यूबेटेड इन एनआईसी फैसलाबाद. और मैं वहाँ पे देखता हूँ कि एनआईसी फैसलाबाद में काफ़ी मेच्योर स्टार्टअप्स हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जब मैं उनके साथ बैठता हूँ या उस इकोसिस्टम में जाता हूँ तो मुझे थोड़ा इंफीरियोरिटी कम्प्लेक्स होता है कि आई एम डूइंग नथिंग, ऑल्दो आई एम वेरी अर्ली इन माई करियर राउट नाउ. बट लेकिन फिर भी एक ना इंक्यूबेशंस का पार्ट बनने से बड़ा एक होता है. जो आपने बात पहले कही थी कि यूनिवर्सिटी में तो आप चीते होते हो, लेकिन जैसे ही आप निकलते हो आपको पता चलता है कि आपने तो कुछ भी नहीं किया है, और अभी भी जितनी आपने एफर्ट पुट किया दैट्स नॉट इनफ. Yeah. I think we all have our own timeline. So I never get low कि यार देखो ये स्टार्टअप कितना ऊपर जा रहा है, इसने कितनी इन्वेस्टमेंट रेस कर ली है, इस फाउंडर के देखो क्या शशके हैं, इसकी क्या वैल्यूएशन चल रही है. Because this is an ongoing cycle and this is something that will keep on happening till the death, right? जब तक you don't disappear, right? So you have to learn to, you have to self-realize that what is important to you, what are the core values that you are focused on. Is it being better than everybody and then showing कि यार मैं सबसे बेहतर हूँ, right? It is sometimes you can get motivated कि यार देखो यार reality check मिल जाता है कि यार you think you're the best but you're not the best, right? So it doesn't put you in depression, it sometimes fuels you कि यार you need to be the best person, right? But then there's a limit कि यार you can be the best but still don't compete with others based on that देखो इसके पास इतना है मेरे पास इतना नहीं है, right? Because sometimes when you're starting a startup and there's a person who's doing a job, he might get good salary in the start, he might get good time with his family, he might spend good time with his family, he will do a lot of good stuff which you as a startup founder cannot do because you're struggling, you're trying to find product market fit, you're trying to find good investors. तो आप देखोगे यार वो मैरिड लाइफ हैप्पीली गुजार रहा है और आप अभी भी ट्राइंग टू रेज इन्वेस्टमेंट, पता नहीं कि अगले महीने पैसे आएंगे नहीं आएंगे, राइट? इट्स डिफरेंट लाइफ ही chose and that's a different life you chose, right? And you're getting enjoyment in this life that you have chosen and he's enjoying that life. So never get down on what others are happening. It's just what you're true, just pick your true values and work on it. Exactly, that's a real thing. I just graduated from university and my class fellows are doing some good jobs in big software houses and I am just working on my startup. और यही होता है कि आपको पता नहीं होता कि अगले महीने पैसे आने हैं या नहीं आने हैं, लेकिन इसके अगर आपका विजन क्लियर है अपनी लाइफ को तो आपका लॉन्ग टर्म में गोल है तो आप कहीं हद तक कॉम्प्रोमाइज कर लेते हो और बर्दाश्त कर लेते हो कि कोई नहीं, अभी हमारा टाइम नहीं आएगा, अपना टाइम भी आएगा. Yeah, and I think it's very important is to have a co-founder. Yeah. Don't do things alone like a solopreneur. Sometimes you really get down and then your co-founder comes and helps you. Okay, bhai, sab sahi ho jayega, kya itni tension kyun le rahe ho? Right? That's why there's always a suggestion, never do solopreneurship. Don't do solo. Have at least 2 or 3 co-founders that can actually help you in this journey.
तो सर व्हेन आई वाज सीइंग योर लिंक्डइन प्रोफाइल और आई वाज सर्चिंग अबाउट यू, तो मैंने देखा कि आपका बड़ा पॉडकास्ट भी करते हैं आप, बड़े स्पीकिंग सेशन, बड़े वेबिनार्स भी करते हैं। तो आप स्टार्टअप्स को किस तरह से रेकमेंड करते हैं कि वो अपनी सोशल प्रेजेंस को किस तरह से बेहतर करें, और क्या पॉडकास्ट और सेमिनार आपकी सोशल प्रेजेंस को बेहतर करते थे और वो आपके स्टार्टअप में किस तरह से हेल्प आउट करते हैं? I think I do a lot of webinars and trainings, workshops, and this is basically when I have something to give and something to teach and something to give to the community, right? I was a Nokia developer champion in my university days. I represented Nokia in my early days. Then मैंने Microsoft को represent किया. Recently मैंने Facebook Meta को represent किया by being a community builder for them in Karachi in developer circle. The point is that when you go through this different opportunities, you try to build community and what values you want to provide. So I think first figuring out कि do you really have something to give to community, to give back to them or not, right? Don't do it because everybody is doing it. ये नहीं कि podcast कर लिया because everybody is doing it. You're trying to do a digital marketing talk because everybody wants to listen about it, right? People, once they attend your talk and they'll understand कि this is all theoretical, this is nothing practical, this is all bluff, right? But eventually you'll get there, you'll learn good lessons. So I think building a brand for your startup, for your name is important, and it gets important if you learn a lot of things you have to give back to society, and then people will invite you. So for me, I went for 3 startup failures, 3 startup nahi chale, chautha chala. So this became a talk itself. What are the lessons that you learned so that I can share with new startups? Wo ye galtiyan na kare. So this itself turned into a topic, right? Second was about teaching them how to code, like from JavaScript, Node.js, Angular. We did those workshops. So एक वो मेरा passion था. हमने भी founder team, मेरे को खुद co-founders थे. We started teaching in university and all that. Right? It turned into an entire talk. Then third was performance marketing, which we ourselves practiced in social jam. कि यार ऑर्गेनिक कैसे बढ़ा सकते हैं, कन्वर्जन्स कैसे ट्रैक करनी है, हाउ टू यूज एम्पलीट्यूड, मिक्स पैनल, हीप एनालिटिक्स, राइट? तो वो चीजें कर करके हमने खुद फिर लोगों को सिखाया. लोगों को सिखाना भी चाहिए, क्यों नहीं लोगों को पता, because people in Pakistan usually do not do performance marketing. They all know how to sell chai, they know how to sell doodh, right? But they don't know how to sell a software, right? How to track those conversions. So then we started giving workshops and trainings to journalists, social media marketers. This is another spectrum of marketing. This includes email marketing and all that. So I think this is how the topics came, and this is how I gave those talks. But it's not something I sat and I planned कि यार नहीं यार मुझे इस पे talk देनी है, मुझे इस पे नहीं देनी है. It's just based on the experience and journey that I learned. I started giving back to the people. I started getting invitations, right? So if you're a brand, if you want to do podcast, talk about your story. Talk about what you're good at. Talk about how you can help others. Talk about any help that you've done, any collaboration you've done. Make it about yourself and the impact you're having, but not about some topic that you read in a online guest book या किसी किताब में पढ़ लिया आपने और उसकी theoretical देना शुरू हो गए, because people will get it कि यार ये तो बस theory है, ये इन्होंने क्या किया इसके. Exactly. That's why we started Founders कहानी, ताकि हम फाउंडर्स की कहानियां सुना सकें. Nice. या सो अगर आप एक स्टार्टअप फाउंडर होते हैं तो आपको डिफरेंट तरह के रोल प्ले करने पड़ते हैं, और आपकी तो जैसे आप बता रहे थे, यू आर अ फाउंडर, यू आर स्पीकर, यू आर अ पॉडकास्ट, यू आर अ वीडियो एडिटर. तो आप इन सारी चीजों को मैनेज किस तरह से? I think first is that my priority is moving the needle, making numbers big for social channel. The customers should increase, the impact should be greater. So uske liye we have to focus on performance marketing, see what's working, what's not working, see the employees, see the feature delivery, right? See the product health kaisi hai, product अच्छा perform kar raha hai, right? What are the features important? So it really drills down from your one metric, which is your core value, and then it drills down to bottom. कि यार अच्छा, is this working fine? जब सब कुछ सही चल रहा होता है तो it's my hobby to edit videos. ये मेरी hobby है. And it's not the core thing कि यार मुझे यही focus करना है. My hobby is to code sometimes. It's my hobby. My hobby is, these are my little hobbies. But my professional work is about generating, bringing more customers, bringing partnership, finding investors, seeing how much is happening in the social media industry, doing R&D, seeing what's happening in this ecosystem of social media. That's my core priority.
right? So performance marketing is mein aa gaya, product management bhi aa gaya, but that's my entire focus on. Others is just hobby, right? You know, it can all wait. If this is going good, then I can do that stuff also. Yeah, that's nice. That's nice. By the way, you are also a digital marketer and you are running a digital media management platform. So आपको क्या लगता है अभी किस तरह से स्ट्रैटेजीज बनानी चाहिए आजकल के सोशल मीडिया के लैंडस्केप में और किस तरह का कंटेंट आपको बेहतर रिजल्ट्स देता है? I think thanks to Elon Musk, इस social media space में बहुत focus आ गया है वापस लोगों का. Everybody is now focused on what social platform they should be at. पहले Twitter था, which is X, but Twitter gave birth to 3 more startups: Blue Sky, Threads, and then there's a third one, Mastodon, right? So these entire concepts came into being, and now there's a lot of pop-up on social media पे कैसे करना है. And I think the first advice would be to use social media management tool like any tool to promote your content across all platforms. Not say, yaar, I'm not on Twitter because I hate XYZ person. I'm not on Threads, but I'll be on Mastodon. You have to be on all platforms because it's free, right? And when you have tools to publish content to all platforms, why not do it, right? So focus on that. And once that is done, then you need to focus on video content, which is I think everybody's saying video content is working really good. खासकर फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम रील्स पर सैचुरेशन आ गई है, बट इफ यू डूइंग फेसबुक रील्स on Facebook, people are not doing it. So if you do that, you will get a good reach over there. So Facebook reels is something which is working very fine. LinkedIn was working 6 months ago. It's still working right now. LinkedIn posts big right content. If it's education, if it serves a purpose, it will get fired, will be spread out to a lot of people. So focus on LinkedIn, video reels on Facebook, and Pinterest infographics. Pinterest is a gold mine which people have not discovered yet, but it's a good place to get your traffic to your website, because 60-70% of the audience of Pinterest is, I think, women. So you can actually target a lot of those people out there on Pinterest. या आई थिंक दैट्स अ वेरी वैल्यूएबल थिंग क्योंकि मुझे खुद भी लगता है कि Pinterest इज अ वेरी पावरफुल प्लेटफॉर्म लेकिन पाकिस्तान में पता नहीं लोग Pinterest पे इतना फोकस नहीं करते हैं. Yeah. या I think it really depends on the customer base hai kahan pe. So I think if your customers are on Pinterest, then actually focus on it. But being us like a global product, we look at the global social media landscape and then we recommend this. सही सही. सो यू आर द फाउंडर ऑफ सोशल चैम्प और आपको पता है क्योंकि मेरा अगर कोई मकसद होगा कि मैं इस तरह के प्लेटफॉर्म्स यूज करूं तो मेरा मकसद होगा कि मैं अपने सोशल मीडिया की प्रेजेंस को मैक्सिमाइज कर सकूं या उसको इंक्रीज कर सकूं. सो सोशल चैम्प जैसे प्लेटफॉर्म्स को हमें किस तरह से यूज करना चाहिए ताकि हमारी जो सोशल मीडिया की प्रेजेंस है या सोशल मीडिया की आउटरीच है उसको हम मैक्सिमाइज कर सकें. हाँ, आई थिंक सबसे अच्छा ही फीचर सोल चैम में तो ये होता है कि आपने हमें कैलेंडर रिव्यू दिया हुआ है. सो हमने एक CSV फाइल दी हुई एक्सेल की. यू डाउनलोड दैट CSV टेम्पलेट, वो एक्सेल में खुलेगा. फिल दैट अप विद 100 और 200 कंटेंट. यार ये जो कंटेंट है ना, ये इतने टाइम पोस्ट होना चाहिए. हिट अपलोड एट सोशल जैम, तो सारा का सारा 100+ कंटेंट स्केड्यूल हो जाएगा. यू कैन सी एवरीथिंग इन कैलेंडर. So a lot of brands and mid-sized agencies use this because just content ready hota hai, pictures ready hoti hain. They use that CSV download it, and they upload it back to social channel. एक साथ सब कुछ schedule हो जाता है. Other powerful feature a lot of restaurants uses is what they do is that उनके content होता है कम, तो क्या करते हैं, let's say एक folder बनाया social channel में, which is called Monday Motivations. उन्होंने 100+ content उसमें डाल दिया और उन्होंने कहा एक campaign बनाई social channel which is called recycle feature. उन्होंने कहा हर Monday को इसमें से एक post उठ के 3 बजे post हो जाए. So every Monday, one post from that folder will be picked up, posted on their page, and every Monday it will keep on repeating. So now they can create a strategy. Yeah, Monday को motivation जानी चाहिए, Tuesday को कोई recipe जानी चाहिए, और Friday को हमारे साथ कोई discount offer जानी चाहिए. So they actually create folders. Everything is automated. एक बार on कर दिया, automation does its magic. So they don't have to focus on posting or creating stuff. और जब भी कोई नया चीज डालनी है, they can just put that in the folder और उसको prioritize कर देंगे. So I think you can use this for social media automation. Other than that, each social media platform has its own strategy. For example, in Twitter, we can repeat a tweet multiple times. Links डाल सकते हैं, you can tag people. So there's a lot of stuff you can go and check it out, and you'll love it.
या एग्जैक्टली। वैसे जैसा आप बता रहे थे कि आपने बड़ी टेक्निकल वर्कशॉप्स की हैं, नोकिया के साथ दी, माइक्रोसॉफ्ट के साथ दी, और आप कराची यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाते रहे हैं। तो इन सारी टीचिंग एक्सपीरियंसेस ने आपके एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में आपको किस तरह से फायदा दिया है? I think ये एक experience है और it really helps you when you're sitting on when you're speaking from you're doing workshops on behalf of these big giants. You're actually trying to motivate people in the room who are there to study. उन सबको साथ लेके चलना सिखाना, and then again that that fear of being on stage, fear of teaching it diminishes itself, and right, and then you want to give back to society. And then I taught one semester, and then maybe I had a great experience that how tough it is for a teacher to teach in a university because हर बच्चा हर तबके का बच्चा आता है, you have to match everyone's level. So I think it really helped in social media journey to go and pitch on stage and talk to investors and all that. दैट्स नाइस, दैट्स नाइस। सो आप वर्कशॉप्स में आपको बड़ा एक्टिवली एंगेजिंग भी रहना पड़ता है, जो लेटेस्ट ट्रेंड होते हैं, लेटेस्ट इनोवेशंस होती हैं इन द इंडस्ट्री, तो आप उनके साथ किस तरह से अपडेटेड रहते हैं? I think update रहने के लिए with those mentors, I think it's very important कि there's no communication gap, and I think you are following the trends. You are knowing कि क्या दुनिया में हो रहा है, so you are updated on that. I think focusing expert on that specific subject is very important. So जैसे for example मुझे SEO सीखनी थी, so I followed the big names in the industry, got on call with them, understood how my problem was, समझा उनसे, follow किया. It's very zero new experience, right? कि आप एक field में आए जिसका आपको पता ही नहीं है. And so it's a very struggling phase, but then you meet the experts, then you meet those people who are preaching about it, then you learn about it stuff. So I think that's one way to get always informed about the new trends. दैट्स नाइस, दैट्स नाइस। वैसे आपके हिसाब से बेहतर कौन सा वे है आजकल कंटेंट का? और अगर हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इंस्टाग्राम और फेसबुक की बात करें, तो उनके ऊपर किस तरह का कंटेंट आजकल चलता है? I think it's based on people you are following, जो आपको फॉलो कर रहे हैं, किस नीच के वो लोग हैं, आपका अकाउंट किस नीच को टारगेट कर रहा है. और फॉर एग्जांपल सर को कहा कि फेसबुक के ऊपर रील्स इज समथिंग वेरी हॉट राइट नाउ, तो वो कोई भी रील आप डालोगे तो वो उसको ज्यादा रीच होगी विद रिस्पेक्ट टू इंस्टाग्राम. क्योंकि रीजन ये है कि वो इंस्टाग्राम में हर कोई बहुत सारी चीजें डाल रहा है, फेसबुक पे रील्स कम हो गई है डालना, राइट. सो अभी उसका टाइम है, तो यूजुअली हमारे कंटेंट इज बेस्ड, टाइप ऑफ कंटेंट इज बेस्ड ऑन व्हाट टाइप ऑफ पर्सनालिटी यू हैव ऑन सोशल मीडिया. अगर आप डेंटिस्ट तो डेंटिस्ट की वीडियोस डालोगे, राइट. कोई आप डांस करते हो तो नहीं डालोगे कोई चीज, राइट. इसी तरह हर चीज मैटर करती है व्हाट योर पर्सोना इज बिल्ट ऑन सोशल मीडिया एंड व्हाट टाइप ऑफ कंटेंट योर ऑडियंस इज कंज्यूमिंग. तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. क्या फॉर एग्जांपल टिकटॉक पे कोई चीज पोस्ट कर रहे हो, तो यू हैव टू सी ये चल क्यों नहीं रही, व्हाट टाइप ऑफ व्हाट टाइप ऑफ पीपल आर वाचिंग दिस वीडियो और किस किस रीजन से वॉच कर रहे हैं, राइट. ये गलत रीच क्यों कर जा रही है हर जगह पे, राइट. सो यू हैव टू गिव देम फ्लैग्स. फॉर एग्जांपल लेट्स से यू पुट हैशटैग ऑफ पाकिस्तान के, भाई पाकिस्तान में इसको लेके जाओ, उसको तुम बांग्लादेश में लेके जा रहे हो, राइट. पुट हैशटैग्स ऑन ऑल दैट सो दैट यू कैन आल्सो ट्रेन द एल्गोरिथम बेस्ड ऑन योर बिहेवियर. सो टाइप ऑफ कंटेंट एक्चुअली डिपेंड्स व्हाट पर्सोना यू हैव, बट देन हर कुछ महीनों के अंदर ना ये ट्रिक्स और ये यू कैन से दिस गोल्डन मोमेंट्स आते हैं व्हेन यू कैन you can say you can use platform की weakness to your power. So for example, एक साल पहले you can actually download all your LinkedIn friends. You can download them in a CSV file with all their email addresses, right? तो वो बहुत पावरफुल था. आपने 3,000 लोगों को ऐड किया, आपने 3,000 लोगों के नाम, कंपनी और पूरी ईमेल एड्रेस आ गए आपके पास, आपने कोल्ड ईमेल्स आपको भेजना शुरू कर दी. लेकिन अब वो खत्म हो गया, वो सिर्फ 30 या 50 देता है और लिमिट लगा दी उसने, राइट. सो इट वाज गुड एट दैट टाइम. सो after some time the strategies and these loopholes get fixed and you lose those opportunities. So this is called guerrilla marketing, this is called growth hacking. कि आपने कोई चीज देखी जो अभी इस्तेमाल नहीं कर रहे लोग, आपने वो अपने बेनिफिट लिए इस्तेमाल किया और अपने अपने कस्टमर स्केल कर लिए, और वो हमेशा नहीं चलेगा, कुछ महीने के बाद वो बंद हो जाएगा. So this is something you have to keep tracking, keep understanding, keep following trends. But I think there's no one specific answer because there are different social platforms और हर प्लेटफॉर्म की अलग स्ट्रेटेजी है. आई कैन नॉट से डू दिस एंड इट विल वर्क ऑन 9 डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, 9 डिफरेंट दुनिया है, 9 डिफरेंट दुनिया की अलग अलग स्ट्रेटेजीज है.
सही 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 सही। सो आप वैसे एक एक्सेलरेटर प्रोग्राम टेक्सटार्स का भी पार्ट रहे, एंड आई एम आल्सो द टेक्सटार्स कम्युनिटी लीडर। तो आपकी वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? It was a very good experience. I've been to more incubators. I think first incubator was Nest.io, जहाँ आ रहा था, and then it was Catalyst Lab, जो भी चल रहा है. Second one was Oman Technology Fund, जिसका वादी accelerator था Oman में. So I'd been part there. They took us to Oman and then to London. And then this recent one was TechStars Toronto, which has been again a good experience so far. I think in all the experiences about again the network you have, the network you build, the connections you have, the more people you meet, the more you ask for help, the more connectors and mentors you'll meet. अगर टेक्सास में ऐसे ही बैठ जाओ कि हाँ मुझे सब कुछ आता है, सब कुछ सही चल रहा है, तो then they will not assign me mentors के नहीं यार इसको जरूरत ही नहीं है, सब कुछ ही अच्छा चल रहा है. But the more I say क्या मुझे इसमें हेल्प चाहिए, मुझे लीगल में हेल्प चाहिए, मुझे इसमें हेल्प चाहिए, they'll give me on, they keep on, they're telling me connecting to mentors, and it really helps us. So I think it was a really good experience with Techstars Toronto. Good manager, Sunil Sharma was the managing director over there. Alicia, Gabby, these were the in his team. I think it was a really good experience. Exposure Mila, they made us stand out. These are the first startup from Pakistan that we invested in the MarTech business, like marketing technology. The first Pakistani product that Techstars ever invested in, or third or the fourth Pakistani company they invested in out of their 2000, I think 3000 portfolio companies. It was a great exposure, great connections. It was a good experience so far. Yeah, that's nice. That's nice. So I'm also arranging Texas Saturday weekend festivals. So, do you think that will be good for the startups or the people who are just in the ideation stage? Yeah, I think it really is a good event. I think I've been a part of Techstars 3-day event in Karachi also. I think next I also partnered with them. You're doing in Faisalabad is very good because people actually get exposure to mentors and to what is really happening in the world, Exactly. right? So when and again, a lot of people come here, they meet more people, and they can become their co-founders. So I have seen the people यहाँ पे आए, उन्होंने मिले एक दूसरे से, उनको पसंद आया, उन्होंने कहा यार चलो हम लोग एक और कंपनी खोलते हैं मिलके और हम co-founder बन जाते हैं. बहुत सारे लोग co-founder की सर्च में आते हैं, बहुत सारे लोग स्टार्टअप की इन्वेस्टमेंट की सर्च में आते हैं. It's a very good experience. It's a combination of all. Yeah, exactly, exactly. So now I have a very personal question from you. आप अपना startup भी चला रहे हैं, आप अपनी trainings भी provide करते हैं with different big companies, and you are also doing some good stuff in terms of podcast or content making. और उसके बावजूद आपकी hobbies भी बड़ी अच्छी रही हैं कि you are have very interest in exploring the nature, cliff diving and all that stuff. तो आप अपना टाइम किस तरह से मैनेज करते हैं? ये टफ है. You need to know your priorities, और जब when you think they are a time again you need to refresh. सीजन आ रहा है, let's say I love swimming, I love snorkeling. अभी एक नया शौक चल रहा है spear fishing का. So spear fishing का is the free dives fishing. You breathe and go inside, hunt fishes and come out. आजकल उसकी सीख रहा हूँ मैं. तो it's a very interesting aspect, and you figure out कि यार it's weekend आ रहा है, so let's just go with your friends. Co-founders मेरे दोस्त यूनिवर्सिटी के मेरे जो मेरे co-founders हैं वो मेरी यूनिवर्सिटी बैचमेट्स हैं. So I go with these guys कि चलो यार चलते हैं, सीखते हैं, सब फिशिंग भी साथ करने जा रहे हैं. So it's a very good opportunity. I think, but you have to balance everything. You have to balance work, religion, and your hobbies and family and friends. I think it's balancing three things is very important in your life. First is religion, second is your work, and the third is your family. And rest will follow up. Rest will stay connected. So I think focus on your one metric or for a professional life. Like method है आपका metric है कि MRR या फिर revenue. This is something you're focused on. Then focus on other things. कि चलो I need to give time to this part of the family, this stuff. And then you get time for hobbies. चलो यार आज ये कर लेते हैं, कर लेते हैं. You need to get time. You'll get figure it out. यस यस। और स्टार्टअप कल्चर ना बड़ा स्ट्रेसफुल भी है, लेकिन लोगों को लगता है कि इट्स अ वेरी फैंसी वर्ल्ड, कि आप अपने खुद के सीईओ ये है। कुछ बिलियनियर्स की वजह से लगता है कि इट्स अ वेरी फैंसी लाइफ और इट्स अ वेरी लग्जरी लाइफ, लेकिन असल में इट्स अ वेरी टफ लाइफ कि आपको दिन 7 घंटे 24 घंटे काम करना पड़ा होता है, और वो बहुत सारा स्ट्रेस लाते हैं। तो आप वो स्ट्रेस किस तरह से मैनेज करते हैं? Yeah, it's very true. But I think I know a graph in my head कि जब आप स्टार्ट करते हो ना, तो आपको इतना सा डाउनफॉल आता है तो आप संभाल लेते हो. सक्सेस आती है तो थोड़ी सी आती है, संभाल लेते हो.
फिर और स्पाइक्स हैवी होते रहते हैं ना, डाउनफॉल आता है, फिर एकदम सक्सेस आते हैं, खुश हो जाते हैं, बोलते हैं दिस इज द बेस्ट थिंग आई एम डूइंग। एकदम से ऐसी नीचे आती है ना, डाउन आती है स्ट्राइक, तो आप फिर उस टाइम ना घबरा जाते हो, तो यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ, क्या क्यों ना मैं जॉब कर लूँ, कि चला जाऊँ। उस टाइम पे यू नीड योर फैमिली, योर फ्रेंड्स, your co-founders, help from above, कि यार it's everything will be okay, just focus on doing, you're doing good stuff, and then you'll bounce back again, you start doing much more again. And it's really strange, we live in a world where people expect you to be much better than what you were पहले. So let's say Yeah. फर्स्ट क्लास में आपकी 10th ग्रेड आया, सेकंड क्लास में 10th, थर्ड आया, सेकंड आया, फिर फर्स्ट आया, अब आप फर्स्ट आए जा रहे हो, फिर लोगों के लिए आम सी बात हो गई, यार ये तो 10वीं क्लास तक फर्स्ट आ रहे, नॉर्मल सी बात है। लेकिन अब मैट्रिक में आए तो वो चाहते हैं अभी भी फर्स्ट आओ, अब कॉम्पिटिशन तो बढ़ गया, लेकिन देन एक्सपेक्ट दिस। सो इवन इन स्टार्टअप जर्नी वो चाहेंगे आप 100 के रेस करो, 200 के रेस करो, मिलियन केस करो, 2 मिलियन रेस करो, कस्टमर्स आपके 10 हैं तो 50 लाओ, 100 लाओ, 1000 लाओ, 10,000 लाओ, राइट, और ये बढ़ते रहेंगे। तो and it's good, you have to focus on increasing, and you shouldn't be comfortable कि यार जो हो रहा है सही हो रहा है, but इसको इतना भी प्रेशर नहीं लेना है कि यार सब कुछ जिंदगी का मकसद ही यही है कि हम इसी को करते रहे बार बार और यही चीज करते रहे। So you have to be really focused कि यार what actual core values are you are having, why you're sent to this world, and what's your main objective, right? If you're aligned with that stuff, everything else will be very easy for you कि यार हाँ ये मुझे रेस करना है, आसान है, हो जाएगा, मैंने इतना मुश्किल काम करा, जिस मकसद से मैं आया हूँ इस दुनिया में, जब मैं वो फोकस कर रहा हूँ तो ये सब तो होना ही हो ही जाना चाहिए, राइट? बट इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल नोइंग व्हाई यू आर सेंट हियर, व्हाट्स योर पर्पस ओवर हियर, देन यू विल बी फॉलोइंग, यू विल बी टेकिंग प्रेशर कि यार उसने तो इतना रेस कर लिया, मैंने नहीं किया, मैं क्या कर रहा हूँ जिंदगी के अंदर, मेरा मकसद ही ये था, व्हाट विल बी माय एंड, राइट? सो इट्स रियली अ वेरी question of what exactly values you're having within you. True, 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 true. So you have a very cool personality, and I'm also part of Gen Z. So Gen Z हर चीज में एक cool factor ढूंढ लेती है. Now I have a very cool question for you. If we give you a chance to invite 3 people on your dinner table, dead or alive, who will that be? Ah, dead or alive, my dinner table. I think it really depends. I think अभी जो फॉरन सोच के आ रहा है वो थिंक उर्तुगुल आ रहा है, उस्मान आ रहा है, और आई थिंक साहबी आ रहे होंगे, सलाउद्दीन अय्यूबी और साहबी है, आई थिंक ये लोग आ जाएंगे। Without और religious aspect. दिस इज लाइक आई वांट टू मीट दिस पीपल, ऐसे यार आप लोगों ने कैसे किया था सब कुछ यार, ये लाइक इफ यू नो द स्टोरी अबाउट उर्तुगुल, उस्मान, and Sahil Ayubi, you would be asking, yeah, how did they do so much in so less time, right? Exactly. How are they able to do it? आजकल हमारी 6 घंटे की 8 घंटे की नींद के बाद हम इतना सब कुछ कर नहीं पाते जितना उन्होंने उस टाइम पे किया हुआ है। सब कुछ कर रहे हैं, फैमिली को टाइम नहीं दे रहे हैं, जंगें भी हो रही है, राइट, फैला भी रहे हैं, दीन भी फैला रहे हैं, फैमिली भी है, बिजनेस भी कर रहे हैं, कारोबार भी है, अमीर तरीन लोग हैं, राइट? तो वो सब कुछ कैसे कर रहे हैं, और सो के उठ के फ्रेश सुबह सुबह भी उठ रहे हैं, राइट, तहज्जुद भी पढ़ रहे हैं, हमसे तो अल्लाह ही बचाया हमें तो, लेकिन कैसे कर रहे हैं सब कुछ? इट्स वेरी समटाइम्स वेरी क्वेश्चन कि यार हाउ आर दे डूइंग इट, क्या वक्त उनके पास ज्यादा था, 48 आवर्स थे क्या? तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू नो एंड टॉक टू देम एंड सी। So you have two persons right now. One Salahuddin Ayubi and other is the Osman as good, right? And who will that person be? Third, it's a very tough one, I think. Third could be the father of Usman Portugal, but third person on my dinner, I think I was with Guy Kawasaki, I think. I had dinner with him, so probably I'll invite him to my Okay. place. Yeah. Okay, okay. I think you give the best answer of these questions. Literally, like everyone saying I will invite Elon Musk, Mark Zuckerberg or Jeff Bezos, but it's really true. अगर मैंने से जब ये पहले क्वेश्चन सोचा था तो मेरे जहन में भी इसी तरह का कुछ आया था कि they guys did some great work और मतलब इतनी कम टाइम पे और इतनी यंग एजेस में और मतलब आई एम ऑल्सो सरप्राइज कि क्या उनके पास ज्यादा टाइम था या उनके पास ज्यादा पावर थी या हमारे से ज्यादा वो इंटेलेक्चुअल थे तो that's really surprising for me even too. Yeah. I think your camera is off.
Yeah, I think the camera, I just turned it on. Yeah, so Yeah, yeah. yeah, you're very right. I think that's the question. Yeah. Exactly. Thank you so much for coming to this podcast, and we had great time with you. It was a great conversation, and we are really impressed by your journey and your kahani. You did some great work, and you are really inspiration to people like me who are just starting their entrepreneurial journey, who are very young at their career right now. So at the last, if you have any questions for the startups, for the young students, can you give some any suggestions or any feedback? Yeah, thank you so much again for inviting. It was a great show. I think I loved the questions, I loved the energy, loved the show entirely. Founders Khani is a good name. I think one advice I have already given, learn to ask for help. The second last one, I think the last I would give them is that give time to your friends and family before they're gone. हमें लगता है कि we'll be immortal, so we'll live forever. So you might live forever, but the people with you around you may not live forever, right? So you have to really give them time, focus on them, maybe just 30 minutes or 10 minutes of your life. जब आप घर जाते हो, your mom actually asks you, बेटा खाना खाया आप? कहते हो हाँ. किसी ने तंग तो नहीं किया? आप कहते हो नहीं. Yes no में आंसर आते हैं. और उसी वक्त एक मैसेज आ जाए ना, from your beloved, how was your day sweetheart? You will destroy internet. You will say, यार ये हुआ मेरे साथ, ये हुआ मेरे साथ, ये पूरी कहानी लिख के सुना दोगे उसको. So you need to focus and give your priorities care who's asking you. And जब बात करो तो 10 मिनट ही दे दो, लेकिन put your phone aside, turn it off, switch it off, या दूर ले जाओ उसको, and then speak to your mom and dad, ask them what they wanted to do in life, what your mom wanted to become, which she sacrificed so that you could become what you're right now. बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता उनकी अम्मी बड़े होकर बनना क्या चाहती है, because they're so lost in themselves that they don't care what they wanted to do. आप जब एक चिड़िया पालते हो ना, आपको आधा घंटा देना पड़ता है उसको बाहर जा डालने में. कोई आप कुत्ता पाल लो, आपको 1 घंटा देना पड़ता है in your day so that you can take it out and वरना आपको दिमाग खराब कर देगा वो. But is this the same amount of time actually we give to our parents? I think we don't give the same time, right? So focus on the people who are around you, because there will become a time that you might say कि यार जब मैं थोड़ा बड़ा हो जाऊँ, जब टाइम दूंगा, लेकिन क्या पता बड़े हो जाओ तो साथ रहेगा. So focus on that. Startup work, everything else will fall in place. Just know how to balance everything and you will be much happier. Yeah, I think that's a really good lesson. And even I feel difficult to give time to my family and friends because, and when you are early in your career, there is a lot of hassle and a lot of pressure कि आप 24 घंटे भी दिन के काम कर रहे होते हो और आप या 3 से या 4 घंटे सो रहे होते हो. तो हमारे वाकई में ये बड़ी प्रॉब्लम है, खास तौर पे स्टार्टअप्स के लोगों के लिए, कि उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता अपनी फ्रेंड्स फैमिली को देने के लिए. Yeah, true. Yeah, exactly. Thank you so much, guys, for listening to Founders Kahani, for tuning into FM 100.4. Thank you for your feedback that you have given on the last podcast of us. Please give us feedback about this podcast as well. Thank you so much. Stay blessed and काम करते रहें, तरक्की करते रहें. See you next time. Allah Hafiz.